Good afternoon, everyone. Very good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, we can hear. Yes, yes, yes. Good afternoon, Thanks, sir. thanks to all of you for joining this webinar and sharing your valuable time out of your busy schedule for this learning. And let me assure you, this 1 hour which we are going to spend today, I am going to give you lot of important points and learnings so that it will add and help for your business and for your organization and for knowledge all as well. So thanks a lot, and it means a lot. Your 1 hour, it means a lot, and I'll try to give maximum benefit for this 1 hour which you are going to spend today with us. Thank you for this. So we'll just start now our webinar. So as we all know, we are joining this webinar to understand the purpose and the balance sheet and profit and loss. So before I start this webinar, I just take few minutes to introduce me, our company and our organization to you so that it will be getting connected with the way we will be discussing. So may I have the permission to introduce my company and myself to you for a couple of minutes? Yes, sir. Please, sir. Thank you. So about Infocost, Infocost is into a specialized management consulting company where we focus mainly on the SAP Finance and SAP Costing module. And we have started from 2012 and we have served more than 200 plus customers as of now in different area and domain on the costing of SAP and finance module of SAP. We have a team of experts in particularly for finance and costing area, and we are based out of Mumbai, and we have a dedicated support team for handling all our clients' queries, issues, or month-end closing issues, or any other things if our client having any problems on finance and costing module, particularly in SAP. So this is what our expertise is, and we have been doing since long, and we are now a kind of a known partner for this SAP Costing Finance in this industry. So this is about me. I am Sarat Agrawal. I am the director and founder of Infocost. So a brief background about me. I am a CA with 2002 qualified. Then I have done my associate certification and professional certification in 2005 and 2010 in SAP. Along with that, I have also having a certification on information system audit in 2004. So this is a brief my qualification background about the things which I have done, and just a brief about my professional journey. From 2002 to 2005, I worked as a chartered accountant, just like you, as you are working for many of the company to deliver the balance sheet, P&L to different taxation related works, which I was doing for the last 3 years till 2005. Then 2005 to 2009, I worked with Siemens, and I have done the consulting and SAP assignments for many companies. Then I worked for SAP India 2009 to 11, and also I worked a small stint for Aditya Birla Group under the Center of Excellence team. And then from 2012, this Infocost is being formed, and we have served almost 200 plus different clients in many domain, many places, many industries, right from mining to textile to cement to steel to pharmaceutical to chemical to service to all the type of industries. I got an opportunity to serve through Infocost. So this is a brief background about me and about Infocost. Now, these are some of the clientele list we have, and this is just a few list of clients. We have more than 200 plus clients. So due to paucity of time, I am not able to showcase all my list to all of you. Then this is a like offerings we do
on our different things. And recently we have completed many projects on product costing, actual costing, COPA, balance sheet, P&L, reconciliation of FI profit with COPA profit or CO profit, cost audit reports. And most importantly, for all these things, we offer a solution for doing the system study so that we can identify the gap challenges, and also we can get the fixation for that, and also the training for our costing team. So all these things we have been doing and successfully doing for many of our clients. And these are all recently completed things. Now, with this, I'll just start our balance sheet discussion for which we have all gathered here. And we can now quickly start our balance sheet discussion and P&L discussion. So, being a finance person, every one of us, I am assuming all of us who are joined here know fairly well about the balance sheet P&L, so no need to explain as why it is required. But still, just for the sake of building the background, I thought let me just give a small slide for that. So it is obviously most important. It is a face of the organization. As we all know, normally the company who are running on SAP are preparing this balance sheet and P&L in Excel. So is my understanding to this is right? If you feel that if you are also using SAP and you are preparing your balance sheet and P&L in Excel, you can you can help us to understand in the chat box. If you say yes, you are agreeing with this statement, just you can write either a small word called y or yes. I can understand who all are needing this kind of solutions in SAP if they are using SAP and doing this thing next in Excel. Quickly, you can just participate with us, because the more if you participate, it will help us to understand how we can communicate our these things to the team. Okay. Now, once these financial statements or balance sheet P&L are prepared uh, in Excel or in SAP, do you think that there is a difference or there is a perspective change for the organization, or there is a kind of a trust building factor would be there for the management, for the stakeholders, for the statutory people who are looking into this? Definitely, yes. But there are so many things which we understand being a finance person, we cannot bring in the system. Okay. So we take care of all such things which we feel we can't and we can. All these things is taken care. Being a finance person, being a chartered accountant, I also understand what are the complexities are there and what are the difficulties are there while we prepare the balance sheet, what kind of challenges we normally face. All these things I understand, but still we have built the solution to accommodate all such issues and problems. And then obviously once this is there in the system, then the transparency is definitely very important and very crucial. Now, we just like to give a comparison about the financial statements in SAP and financial statements in Excel. Now, I'll just quickly say the Excel, what we create a financial statement, we do it from trial balance, right? We download the trial balance and we make that grouping in Excel from the trial balance and do the necessary balance sheet P&L GL grouping. Sometimes the file and the linkage and the formulas are very heavy, and there is a risk of some numbers mismatch or something is there, and we definitely have that kind of a comfort in Excel. We can always manage that kind of things, so that's not a big challenge, because we have been doing things for last maybe couple of years or maybe more than 5 years, 6 years. Then obviously there is no doubt in that, since we are doing it in Excel, so manual efforts are there, adjustments and things are to be there. If some numbers we are changing in Excel, then definitely automatically that numbers can't be changed in SAP books of accounts. So those things are known to us and we have been doing things and we are complying with our regular books of accounts and statutory things with a good way. So no complaint about that. Okay. So I'm not saying there is a complaint when we are doing it in Excel. So Excel, what we are doing is correct and we are doing it in a very good way.
But there is a dependency factor is there, the people and the person who is doing that. So he need to do this exercise on a time to time basis, on a daily basis, or maybe on a weekly basis or monthly basis. So there is a dependency is there. Now let's compare that in SAP. If we have it in SAP and all the requirements, statutory requirements, schedules, everything should be there in SAP. Okay. Then maintenance in terms of GL grouping changes should be very, very easy. It should not take any kind of a technical help of a IT team or technical help of maybe the SAP consultant or IT consultant. They should not come and tell ki for one GL I need to move one transport request, one changes, one approval. All these things should not be there if I am going to utilize from SAP, right? All these things should be very, very easy. And the person who is managing the balance sheet and P&L, definitely, if we agree, the person who is managing the balance sheet P&L is not having that much of knowledge and expertise on SAP. So he or she should be in a position to manage the GL grouping very easily the way he or she doing it in Excel. So it should be that simple. So the point is that, so if we get that simplicity, then only it is usable. Otherwise, it is not. Then there should be a facility for missing GL identification. Suppose if today I have created 5 GL or 10 GLs, then in Excel, I can get a kind of a mismatch or balancing figure in the end of the Excel reconciliation and understand, okay, 5 GLs are not mapped in my Excel file or this grouping. I can easily plug them and group them. So similar facility or similar feature should be there with that much of ease and simplicity in SAP as well. If that is there, then yes, I might use this SAP feature of balance sheet and P&L, else not. So that's something which is very, very critical. Then it should be easily downloadable in Excel and it should be user friendly. Whatever the balance sheet P&L we prepare in SAP, may it be good, bad, ugly, whatever it is, but it should be downloadable in SAP, in Excel, because there are so many things we do, coloring, maybe signature, this, that in Excel, and we prepare and submit. So that facility should be there every time. So this is what I have done a comparison between the Excel balance sheet, the way we are doing, and I'm not downgrading the quality or the kind of a practice of doing it in Excel. I have been also doing it. I was doing it, that same thing in Excel when I was working under different capacity for different organization. But now, since I learned from my work and from my experience, then I thought, why not we can help our other professionals to get it done directly from SAP with minimum complexity and minimum challenges. So this is my just effort to help all of you. Is there any question on this? I can give a pause of 30 seconds or maybe 1 minute. Yes, Mr. Agrawal, can I speak? Yes, please, sir, you can speak. Agrawal ji, what is happening is that for every report which is getting generated from different software, SAP software or Tally or any other financial software, there has to be a base with regard to from the Government of India regulation. For example, the balance sheet and P&L, which are basically generated, are as per the Companies Act. Correct. Okay. So what I have heard that it is basically the chapter 3, which is related with for the preparation of the balance sheet and P&L account. Am I correct? Yes. So So this I is just why. wanted, Huh. sorry. Yeah. I Go just ahead. wanted I just wanted if you can enhance this chapter 3 and the different sections applicable from Companies Act point of view or income tax point of view, so that whatever reports, whatever balance sheet and whatever P&L account, these things are getting generated from the software are in compliance with the law, with the regulatory authorities. Absolutely, Nanduji. So this is my first statement. If you see, the balance sheet and P&L are exactly same as per the statutory requirement with all the schedules. So this is my first statement when I am going to prepare and deliver this balance sheet P&L.
So normally there are different companies. Some company follow Ind AS method, some company follow Schedule 6. So as per the requirement and the industry or the organization, because in India there is only one law. There is no multiple law is there for financial accounting or income tax or something. There is only one law of land is there. So whatever the law of land is there and which is required for us to file the balance sheet and prepare the balance sheet. So the balance sheet and P&L from SAP would be prepared in that same manner, no different. As per chapter 3 or as per chapter 6, which you just informed us. Is it chapter 6 or chapter 3? So for the purpose of filing to the Companies Act or for the purpose of filing to the income tax, I believe we are going with Ind AS format. Okay. So that's what I said, sir. If you need different statutory requirements to meet different statutory requirements, we can definitely build that parallel things, maybe slightly change in the format or something. But whatever is applicable for our statutory requirement, that can be fulfilled and that format can be prepared from the system. I can show you some demo. I have arranged some demo also in SAP how to do that and how the format would look like. So there is just a demo. We can always change that formatting as per our expectations. Yeah, I'm totally agree with you. I just wanted to understand whatever the format which we are going to prepare, that should comply with the chapter 3 of the Companies Act, or because I have confusion whether it is chapter 3, it is as per Income Tax Act or as per Companies Act. I also need to refer that, sir, because I recently I'm not so much of connected with the chapter 3 and chapter 6 related requirement of Income Tax and Companies Act, because my focus completely is into SAP kind of things. So I also need to clarify and check, and maybe I can confirm you back on that, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah, yeah, yeah. Any further questions on this? Are these points of comparisons are making logical sense, or you feel that something more should be there in SAP? Any feedback from anyone? Because your feedback will help me to explain these things, or maybe take up your pain points and build that, maybe if not there in SAP. Okay, so fine. So once we go along, then I can further check with you. Okay, then how to prepare in SAP? So first of all, we need to do the grouping of GL accounts as per our financial statement, that is balance sheet and P&L, under different grouping. For example, equity, share capital, reserves and surplus, fixed assets, non-current assets, current assets. Under the current assets, let's say receivables, inventory, cash and bank, etc. So that kind of groupings we need to prepare first of all, and then we need to develop that report with the help of a report painter tool in SAP. So all these reporting we are doing without any ABAP coding. So that is something which is very unique and very kind of a user friendly, making the solution more user friendly than technical, complex. So that's why any user can go and make some small changes if they want to do that, if they learn how to write and do the report painter things. Then checking the value in the SAP report with financial trial balance, then running the report and balance sheet and with schedules. And here, once we prepare this, you can drill down up to your GL level as well from the balance sheet itself. So now let's see, and let's have a demo in SAP. So let me just, for a minute, I'm just not unsharing my screen to log into SAP. Okay. So I logged into SAP, and this is our Infocost SAP system.
and it is a version 2023 of HANA version. So we are using these things for our own at Infocost. Now I'm just going to log into balance sheet panel. Before balance sheet panel, I just want to show you the grouping. So this is the balance sheet grouping. You can see this. So this entire balance sheet and P&L are grouped here, and these are the assets. Under the assets, we have this many fixed asset. This. Under this, these are the GL accounts linked to this. So the maintenance of this GL is very, very easy. No need to get any ABAP or any technical nature of help. Any finance person can do it quickly in just 2 minutes. That also I will show you how to do that. So the entire balance sheet mapping is done here. Different expenses, different revenues are grouped here. Okay, so once we go along, we create this grouping according to your requirement and your way of working. So this is one simple account grouping structure, which I just wanted to show you. Now, let me quickly show the balance sheet for you. So we have designed a variant for that, and I'll just click that variant and run this report. Yeah. So this is like a illustrative format we have created, and some data is also captured here. Please don't see the data in terms of financial analysis. I just captured this data with some dummy numbers. So the numbers are in lakhs. So this is my fixed assets. Okay. So fixed assets is, let's say, 1695. Then let's say we call this as non-current asset. Then we have a current asset section, inventory, trade receivable, cash and bank, and other current assets. And then total asset is, let's say, 11,03,521. So this is my total asset balance. Now, similarly, we have a application of fund, that is equity and share capital and everything. So under the application of fund, we have share capital, reserves and surplus, borrowings, deferred tax liability, net liability, and then sundry creditor, trade payables, statutory dues. And the liability section may, you understand, there is a gap would be there for the profit and loss, because the profit and loss will come at the end of the year when we do the GL carry forward. So this profit and loss is, let's say, 1002. So 1002 would be the profit and loss. So if I take up that liability without P&L and then P&L, then I'm getting a total liability of 11,03,521, which is the same as my total assets, 11,03,521.34. And here you see there is a difference line is there. So this difference line will be helpful for us whenever there is a new GL coming into picture and the balance in that GL is not coming and reflecting here. So that kind of things will be easily identifiable. If I'm getting a 0 balance, then there is no differential GL unmapped here. If there is a balance will come here, then definitely there is some GL which is lying and which is not mapped here. So like we can understand and we can get this GL identify for that. So I will help you to know how to bring that GL and how to identify that. Everything I will just explain you in just next 5 to 10 minutes. Now, after we see the balance sheet, assets, P&L, and the total liability and asset liability, we have below down, we have our notes to accounts. So against this note number 1, fixed assets, we have fixed asset total. So if I want to see my detail about the fixed assets, so what I can do, there is an option available here called call up reports. I can click on that. I can select the fixed asset schedule number. Okay, that is this. So I just click here. So I can get the GL by GL detail for that number which is there in the balance sheet. Okay,
So this is how I can go up to the GL level right from my face of the balance sheet. So from the face of the balance sheet, I can just scroll down to reach the schedule to the balance sheet, and from schedule or from the face of the balance sheet itself, I can just click on the call-up report and I can click on any of the schedules, whatever is there in this particular balance sheet, and I can check. For example, if I want to check the inventory schedule, I can click on that and I can see the inventory figures directly from the system. Okay. So it is that simple. So if you want to check any other, let's say you want to check for, let's say, uh, other current assets, what are the other current assets there? So there is no other current assets number I have kept there. Maybe I can check for, let's say, uh, borrowings maybe there. So you can get the borrowing figure here. So this is how it is. So it is very, very simple and very, very easy to navigate and come out and go to our analysis in that way. So this is how the entire schedule is there, and this is easily downloadable in Excel. So if you want to download it, you can just save to PC file. That option is also there. So everything is available in this particular screen, and this is how the balance sheet will be prepared, and the entire formatting is prepared with a kind of a understanding and demonstration. But when we create for you, it will be completely matching with your way of working with header, footer, and we will try to give you all the information for your name of your organization on the top. Everything will be coming to you. Any questions as of now before I go to profit and loss statement for this same demonstration? Any questions, any feedback, any like suggestions? Please be open with your feedback and participation so that we can improve this and we can try to help you all. Okay, no issues. So let's move further. So if you want to save a particular abstracts, for example, you have done a finalization and you want to save an extract, you can save this extract so that next time when you come, that extract will be in the same number, same date, same time, and you can maybe check with your kind of things. So that's how also that facility is also there. Now I'll go to the profit and loss. I'll select that particular variant here. So this is the profit and loss. So the current period, reporting period, and you can see the numbers and with the schedule number. Okay, the total revenue, total expenses. Okay, the profit and loss, and the profit and loss will be exactly same as it was appearing in the balance sheet for the period for the year. And then the here also we have a differential column. Okay. Okay. So here also there is a differential column. So if any GL is missed out of this total grouping, we can easily get the GL balance here and we can identify that GL. Okay. And again, here also we have a total schedules are there. So here also I can call up a report. Okay. Here also if I want to call up a report, let's say if I want to call up a report for operative expenses. So this is how the operative expenses report will look like, and the total GL by GL number will be there. So you can directly go to that GL level, and I can further link this number with call-up report for the line item report. So you can go up to the line item right from your balance sheet. So this facility is exactly same as we have in any other normal reporting software of Tally and all. So from Tally, as we can click there and we can go from balance sheet to the line item to the line item to the document. So the similar feature
feature I thought of building here as well in SAP with simplicity as well. No further complex points. Now, so this is the entire P&L, how we can create and all. So now I just want to show you the maintenance of that account group. So in order to do that, I'm going to make some changes in the account group and show you. So here what I can do, out of this total GL grouping, I can remove one GL group, one GL from the grouping, and also show you how the difference will populate here, and we can identify the GL which we have removed from the group, assuming that is a new GL. Will that exercise help to clarify the things for you? Uh, since I'm not hearing anything, am I audible clearly, na? Yes, sir. Okay. Because every silence, so I thought whether I'm audible or not. So this is the group. So from this group, if I just remove one of the GL, for example, let's say I remove this GL, PM consumption GL. So this is how we can either remove or add. Okay. So select this GL and 4 all 020. I remember it. Remove here. So now wait. This is one GL I removed, and let me remove one more GL. Let's say in employee benefit, I can remove this salary GL. 4 all 0311. I remove these two GL. No need to remember. System will itself tell me these are the two GL you have removed. Okay, this is as simple as that. This maintenance is done. I remove these two GL. Now I'll run this report for P&L. Okay. Now again, if I check, so there is a gap is coming here in the difference. Check GL. 1 second. In operating expenses. So the numbers are changed. Now I'll do one thing. So this report maintenance is very easy. I can immediately go and maintain that report. And go to this option. So you can see the GL by GL grouping directly coming here. Okay. So every GL is coming here. Whatever GL we have mapped is coming here. Now we can go to the differential GL. So this, see, I'm just trying to show you how you can identify these things so that it can be easily done for you. Just a second. I'll show you how the report structure is.
So if I just go to the P&L, so this is how the report structure can be understood. And one second. I am just going into the architecture of creating that report. So here you can see the entire report is created in this manner. So all this formula, everything I can set here. So for example, if there is a issue with anything, I can get it immediately checked. For example, if there is a checkpoint is there. So what is the formula for checkpoint? Okay. So this is as simple as that. It is just like a calculator I can use for my calculation. So for example, total revenue and total expenses. Okay. And what is my difference? What is my total GL? So under this total GL, I can give a range. Here I can also give a range. I'm just trying to show you how you can get it done. Okay. And in this difference, you can see these numbers will come. So this changes, I thought, let me just show it to you so you can understand how easy it is to maintain by the user if there is a change is required in that. So now I just make some changes in that report for the demonstration purpose. Now I just run this report for you. Okay, now you can see the checkpoint is something different and the total PLGL is something different. So under this total GL, we have taken a range of 300 to 499. That is all our GL account. And the P&L balance is coming as 1361. So it means there is a difference of 359. Okay. So we need to identify this difference of 359 under the reporting column under the difference line item. So how to do that? Come back. Now again run the report. Take the selection variant. Go to the object list. Just same here. Okay. Remove all these things and we'll take whatever the relevant things is there and we can save this as a layout also for you or for future purpose. I'm doing it so that you can understand how to be done. Okay. So under this difference and we need to find out for reporting. I'll take the account number also, description, difference reporting. Yeah. And under this, I'll put it as not equal to 0. So these are the two GL system giving us that yes, and I can easily save this as a layout. Let's say check. And I can make it as a default also. So next time it is required, I can immediately find out this difference. So any new GL, if it is missing, I can easily get. So this 2GL system is saying it is missing from the analysis and the total is same 359 something. Yeah, 359. Now, once we get this GL, then how to add these GLs in this table grouping ADH2. Again, same grouping. I can go to expenses in the operating expenses. Here I should know where to add. So just if I just take here, so this GL is 40020 4 1 2 3 4 5 6 7 20. Okay, this GL is added here, and under the employee benefit, I have removed one GL for 311. The GL is 311 only, right? 311 400 311. So this is added here.
Now this GL grouping is maintained now. Now if I again go and run this report, with the same variant, first I'll just check in the main sheet. The difference now should go. Yeah, so the difference is 0 and the checkpoint and the total GL is matching. And if I run in that missing GL report, there also I'll get 0 number. Yeah, no, nothing is coming. So if any GL is missing, it will come here. So this is how the entire reporting can be done and can be managed with the balance sheet, P&L, grouping, reporting, schedule, line item display, everything you can get it on the system. I just open that phase of the balance sheet again, if you have any question. Yeah, I just put it here. So I give a pause for another 1 or 2 minutes because this is something very, very important. So please feel free to ask your questions. This entire solution is developed in standard SAP system without any customization into it. So we have applied our understanding, our experience, our knowledge, and build this entire system. Agrawal ji, Yes, sir. Nandu here. Yes, Can we Nandu. go up to transaction level entries? Can we see the transaction level entries also in this? Yes, yes, we can see that. We can see that. So here, how I did it. So for example, let's say in inventory, I can go to inventory. Okay. So from here, I just need to add one more call-up report to go to the transaction level. So the way I added a call-up report for a particular schedule. So here also I need to sync a call-up report to go up to the transaction. But that is a slightly, you can say, bulky, but yeah, we can do that. You can call up that report and you can reach to that transaction level report. Because normally the transactions are heavy, so you need to wait for maybe 2 minutes, 5 minutes to get the transactions come. Okay. But yes, you can get that. Okay, sir. Thank you, sir. Any other questions from anyone or any feedback, suggestions? Because your suggestions, your feedbacks are very, very important for me. First of all, are you seeing any value in this whole solution, what we saw on and what we displayed over here? एक मिनट में वेदी जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वेदी जी हाँ रमेश कुछ बोल रहे हैं या रमेश जी? हाँ मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूँ वेदी जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी शरद सर ने बताया वो अपने ये जो SAP से सहाना सिस्टम है उसमें सब अवेलेबल है हाँ हाँ बिल्कुल या कुछ डिफरेंस तो नहीं है जनरल सर ने बताया कि ये सब अपने SAP में है तो यदि मैं भी ऑनलाइन चाहूँ अपने SAP से डायरेक्ट निकालना चाहे बैलेंस शीट या पीएल तो हो सकता है अपने में भी कुछ डिफरेंशियल जो अभी बता रहे हैं उसमें डिफरेंस है कुछ नया बताए हैं कि वो ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है पहले से अवेलेबल है अवेलेबल है लेकिन अभी जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सेल के थ्रू जा रहे हैं उसका तो मेन रीजन है कि कुछ प्रोविजन एंट्री रहता है या कुछ मंथली एंट्री आगे पीछे के रहती हैं वो सब नहीं रहता है इसलिए हमको एक्सेल में डाउनलोड करके मैनुअली करना पड़ता है ये मेन रीजन है जैसे कि मैं जानता हूँ तो क्या सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कोई भी मंथली एंट्री है हमारे पास कोई प्रोविजन है जैसे कि हमने कोई LC पेमेंट हमने LC इस महीने में ओपन किया मई मंथ में एक LC ओपन हुआ जिसकी की लाइफ में 90 डेज की LC है एनर्जी चार्ज हमने पे कर दिया ये तो ऑलरेडी 3 मंथ्स के लिए हमको मई मंथ का बैलेंस शीट निकालना है तो हमारा तो 3 मंथ्स का उसमें ऑलरेडी एक्सपेंस डाला हुआ है तो जब तक हम उसको बाइफरकेट नहीं करेंगे तब तक तो एक्यूरेट नहीं दिखेगा तो इसलिए मैक्सिमम खर्चा इस टाइप का रहता है जो एक्सेल में डाउनलोड करके मैनुअली उसको स्प्लिट करते हैं खर्चे को जो SAP में नहीं हो पाए
तो सर इसके लिए ना ये सेम हमने एक जगह किया भी है। हमने क्या किया है सर कि एक हमने ना अलग अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया है एडजस्टमेंट्स और प्रोविजन एंट्रीज के लिए, जो आप एक्सेल में डालते हैं और एसएपी में नहीं डालते हैं। तो वो अकाउंट ग्रुप अलग से ही रहता है और उसके जीएल भी अलग से ही रहते हैं। तो उनके बैलेंस आप अगर कभी भी देखेंगे तो वो आपको मोटा मोटी जीरो ही दिखेंगे, अगर आपको उनको ट्रायल बैलेंस में लेके नहीं जाना है तो वो अकाउंट ग्रुप और अकाउंट हम लोग खोल के देते हैं और उसमें आपसे हम बोलते हैं कि जो चीज आप एक्सेल में कर रहे हैं, जो चीज एसएपी में आप नहीं कर रहे हैं, उसको आप एसएपी में करिए, ताकि वो एक ट्रैक भी रहेगा कि कब रिवर्स करना है और कब नहीं करना है, वो आपको पता भी रहेगा। तो वो हमने करवाया है सर, बहुत सारी जगह पे करवाया है हमने ये काम, और ये होता है। क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारी एंट्री जो होती है मैनुअल होती है, प्रोविजन होती है, एडजस्टमेंट्स होती है, जो कि बैलेंस शीट के लिए डालनी पड़ती है, तो हम डाल सकते हैं कि अकाउंट ग्रुप और अकाउंट क्रिएट करके अलग से। इसके लिए तो डेप्रिसिएशन भी हर पर मंथ रन करना पड़ेगा। देखिए डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है, कोई कोई कंपनी हर महीने करती है, कोई कंपनी क्वार्टरली करती है। ठीक है, जो कंपनी क्वार्टरली करती है उसके लिए मंथली प्रोविजन एंट्री हम एसएपी में डलवा देंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई नया काम करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं वो करिए, अगर आपको अपने प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट करनी है वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कोई इंप्रूवमेंट अभी नहीं करनी है, जो मैं कर रहा हूँ वही करता रहूंगा, तो जो एंट्री आप एक्सेल में डालते हैं वो चीज आपको एसएपी में डालना है। इतनी सी बात है बस। और एसएपी ठीक में है। डालने का फायदा ये होगा कि आपको वो चीज का ट्रैक रहेगा कि क्या डाला है क्या नहीं डाला है, तो कुछ छूटेगा नहीं, कुछ मतलब मिस नहीं होगा आपसे कल को। बाद में उसको रिवर्स कर दीजिए जब आपका ओरिजिनल डेप्रिसिएशन रन हो रहा है तो। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसका बिल आता नहीं है, जैसे बिल नहीं आया तो मैनुअली लेना पड़ता है, बिल है नहीं, बिल राइट, पेंडिंग है, तो सबको राइट, भी मैनुअली एक्सेल में लेके प्रोविजन करते हैं। करेक्ट, आप कहने करेक्ट। की प्रोविजन को थ्रू से आप करें। करेक्ट, नहीं नहीं, प्रोविजन को सैप के थ्रू मत करिए, आप एक्सेल में वर्किंग करिए, बट एंट्री डाल दीजिए एसएपी के बैलेंस शीट के जीएल में या पीएनएल के जीएल में। एटलीस्ट क्या होगा सर उससे कि वो चीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपडेट रहेगी। कल को आप अगर एसएपी से पीएनएल बैलेंस शीट निकालते हैं, उसमें से जो आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट निकलता है और जो एक्सेल का पीएनएल का प्रॉफिट निकलता है, एटलीस्ट वो दोनों आपस में टैलीड रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा बैलेंस शीट ऑफ एसएपी इज कंप्लीटली अलाइंड विथ माय रिपोर्टेड नंबर। आप आज एक नंबर रिपोर्ट करते हैं सर बोर्ड में जाके या मैनेजमेंट डायरेक्टर को जाके, और कल को वो एक्सेल कहीं से इधर से उधर हो जाती है, या फिर जो जिसके थ्रू से करते हैं वो एक दिन दो दिन छुट्टी पे चला गया है, तो वो नंबर रिपोर्ट करना प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कोई भी सडनली आके आपसे कुछ पूछ लेता है, कर लेता है, तो अगर आपके पास सारी चीजें एसएपी में है, आपको खाली बस एसएपी की रिपोर्ट रन करनी है और उनको अपना एक्सप्लेनेशन देना है। आपको भी पता है कि ये जीएल मैनुअल है या जीएल ये वो सब सीरीज, उसका ग्रुपिंग सब अपन वैसे मैनेज करके अलग से उसको शोकेस करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या वो मतलब प्रोविजन और क्या एडजस्टमेंट और क्या रेगुलर है। ये पात्रा साहब हो सकता है क्या ऐसा? मेरे को तो बैलेंस शीट उतना पता नहीं है। आप सब पात्रा सही है साहब। सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक सवाल था सर इसमें। हाँ जी। अपना जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेरे को जानना है। जी। ये जो सैप का ग्रुपिंग है ये जीएल से ग्रुपिंग है। जी। तो ये जीएल का एक सर्टेन 50 तो जीएल है, 50 तो जीएल का एक टोटल वैल्यू अपने को रॉ मटेरियल कंजम्पशन में फिगर शो कर रहा है। राइट। जैसे हम लोग स्पंज आयरन बना रहे हैं सिमल्टेनियस, साथ ही साथ हम लोग एसएमएस भी चला रहे हैं, फेरो भी चला रहे हैं, पावर भी चला रहे हैं। राइट। तो मेरे को मान लीजिए स्पंज आयरन यूनिट का मेरे को कंजम्पशन देखना है, ठीक है, और वो भी मेरे को आइटम वाइज देखना है, तो क्या देख पाऊंगा मैं इसमें? बिल्कुल देख पाएंगे सर। आपको अपने प्लांट का प्रॉफिट सेंटर तो अलग अलग ही होगा, स्पॉन्ज आयरन का अलग होगा, एसएमएस का अलग होगा, सबका प्रॉफिट सेंटर अलग होगा। यस सर। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर वाइज हम ये बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बिजनेस एरिया लिया हुआ है, ठीक है, और बाहर में भी मेरे पास प्रॉफिट सेंटर आता है, अंदर भी आता है, दोनों जगह आता है। प्रॉफिट सेंटर भी आता है, बिजनेस एरिया भी आता है। अब मैं आपको अगर पीएनएल पे चलता हूँ, देखिए सर यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट सेंटर आ रहा है। एक तो बाहर भी आता है, तो बाहर भी डाल के देख सकते हैं, और मैं चाहूँ आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए तो अंदर भी प्रॉफिट सेंटर लाके दे सकता हूँ आपको। यहाँ पे भी मैं आपको प्रॉफिट सेंटर दे सकता हूँ बिजनेस एरिया के साथ साथ।
तो आपको प्रॉफिट सेंटर वाइज मिल जाएगी। या मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि एक अलग रिपोर्ट बना दूं आपके लिए, जहां पे कि सेम ऐसे ही चले, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट सेंटर ABCDEFGH कॉलम में सारे प्रॉफिट सेंटर लाके डाल दूं आपके। और ये ग्रुपिंग भी मैं अपने हिसाब से जैसा आप मांगेंगे मैं वैसा आपको करके दे सकता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए, जैसे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को मैं अगर खोलता हूँ, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस करके मैंने बनाया हुआ है, यहाँ आपके सारे रॉ मटेरियल के GL हैं, ठीक है। तो इनको भी मैं फर्दर कोई और ग्रुपिंग में देखना है आपको, या प्रॉफिट सेंटर वाइज देखना है, वो सब करवा के दे सकता हूँ आपको मैं। नहीं, ये जो सर ग्रुपिंग हो रखा है ना सर, जी। मेरे को इसमें आइटम वाइज अगर देखना है तो जैसे मैं स्पंज बना रहा हूँ, तो हम्म। इसमें मेरे को आयरन ओर लग रहा है, आयरन ओर पैलेट्स लग रहे हैं, और थोड़ा सर डोलोमाइट लग गया। वो ऐसे चीज जैसे आपको ना, हाँ वो चीज आपको जब मैं इसको क्लिक करके उसके ट्रांजेक्शन लेवल पे जाऊंगा वहां दिखेगी। बट वो चीज क्या होता है, फाइनेंस में मटेरियल कोड का कैप्चरिंग जो है वो प्रॉफिट सेंटर लेवल पे और GL लेवल पे होता है। तो प्रॉफिट सेंटर GL लेवल पे तो मैं आपको दे दूंगा। बट आपको अगर फर्दर उसकी ट्रैकिंग चाहिए कि मेरे को क्या मटेरियल को बनाने में क्या लगा, कितना लगा, कैसा लगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सर कि कॉस्टिंग सीट। तो वो अलग डेवलपमेंट है, वो अलग प्रोसेस है सर। वो ये बैलेंस शीट और P&L का पार्ट नहीं है फिर। सर जी तो वो इसमें एक कॉस्टिंग चीज सीट हम बना के दे सकते हैं आपको, अलग से है, वो अलग है। सर जी एक चीज में से बोलना चाहता हूँ जो अभी शायद पात्रा जी पूछ रहे हैं। ये जी। स्पॉन्ज आयरन यूनिट में हमारा 3 प्रकार का मेन रॉ मटेरियल है, कोल, आयरन ओर और डोलोमाइट। करेक्ट। अब यदि मैं ओर को 2 पार्ट में बांटता हूँ, ओर हमारे पास एक DRCL ओर है और एक पैलेट ओर है। अब ठीक इनको है। देखना है कि हमको पैलेट कितना लगा और आयरन ओर कितना लगा। तो लेवल का तभी हो सकता है कि जब एक एक आइटम वाइज हमारा कॉन्फ़िगरेशन FI साइड से भी GL भी सेपरेट। जैसे पैलेट कंज्यूम करने का पैलेट का सेपरेट GL खोलें, पैलेट कंजम्पशन अकाउंट, DRCL कंजम्पशन अकाउंट, और लिंक हो अपने रॉ मटेरियल कंजम्पशन से। जिसका अपर लेवल में रॉ एग्जैक्टली। मटेरियल कंजम्पशन है उसके नीचे एग्जैक्टली। लोअर लेवल में चलें। अब कोल कंजम्पशन अकाउंट, अब कोल में भी आपको 3 पार्ट में चाहिए कि आपको इंपोर्टेड कोल अलग हो, इंडियन कोल अलग हो। तो उसके भी लिए खोलें कि कोल कंजम्पशन अकाउंट के अंदर में आपका रॉ इंपोर्टेड कोल अकाउंट अलग, इंडियन कोल अकाउंट अलग। अब इंडियन कोल में भी आप SCCL का अलग खोल रहे हैं, ट्रेडर का अलग खोल रहे हैं, उतना GL खोलते हैं। यदि नंबर ऑफ GLs बढ़ा लें तो एक एक GL का एक एक मटेरियल से यदि लिंक करें, भले वो जितना लंबा 1000 2000 4000 जितने लंबे बन सके इतना अपने पास डिप्थ बनाएंगे, तभी जाके मेरे ख्याल से वो कंट्रोलिंग वो देख पाएगा। अदरवाइज आपका यदि कंबाइंड है तो वो देखना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। अब पर इस पर नहीं आप नहीं, बता सकते हैं। मैं आपको एक ना सर एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक डेमो किया था एक FMCG कंपनी के लिए। तो उनके GL एक ही थे। अभी मैं थोड़ा बैलेंस शीट के डिस्कशन से हटना पड़ेगा मेरे को, जो आपका क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट के डिस्कशन से हट के है, ठीक है। तो आपने क्या पूछा है कि एक GL रहेगा और मल्टीपल मेरे को रॉ मटेरियल का ब्रेकअप चाहिए, तो कैसे देखना है। तो ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, हमने किया था सर, अभी एक डेमो दिखाता हूँ आपको मैं। ये एक आइटम कोड है, लेट्स से भुजिया सेव का। तो मैं इसमें जाता हूँ कॉस्टिंग टू में। अब देखिए सर, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का GL है वो एक ही है, 4 all 0010, ठीक है। अब इसमें रॉ मटेरियल कितने सारे लग रहे हैं आप देखिए। मोट दाल, चना दाल, भुजिया मसाला और ऑयल, ये 4 रॉ मटेरियल लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सर, GL एक ही है, राइट। 4 all 0010 10 10 10 10 GL सेम है। अब रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इसको अलग अलग देखना है, तो कैसे देखेंगे। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, अब ये अलग अलग आ गया देखिए। मोट दाल का कॉस्ट अलग आ रहा है, चना दाल का अलग आ रहा है, मसाला का अलग आ रहा है, ऑयल का अलग आ रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से हम कर सकते हैं सर। जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा आपके लिए भी कर सकता हूँ, सारे रॉ मटेरियल का एक अलग ग्रुपिंग बना दूंगा और मैं दिखा दूंगा आपको। GL एक ही रहेगा, GL इतने सारे खोलना तो फिजिबल नहीं होता है ना सर कभी भी। तो GL एक रहेगा, उसके अंदर में आप आइटम वाइज सेपरेट कर देंगे। करेक्ट करेक्ट, आप जितने भी ब्रेकअप मांगेंगे मैं आपको लाके दे सकता हूँ यहाँ पे। ये क्या ये PL में देख सकते हैं या इसको कॉस्टिंग PL नहीं समझाएगा? सर, ये सर PL में नहीं देख पाएंगे। ये PL में देखने के लिए तो मेरे को GL चाहिए ना सर। ये मैं अलग से रिपोर्ट में आपको दूंगा देखने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग एंड कोपा की रिपोर्ट। क्योंकि PL तो सर GL से नीचे तो जाता ही नहीं है, PL में जाने के लिए तो GL चाहिए चाहिए मेरे को। अगर मैं GL नहीं खोलना चाहता हूँ तो मेरे को वो PL में नहीं दिखेगा ना।
अगर जीएल खोलेंगे तो पीएल में दिखेगा, बिना पीएल से दिखा सकता हूं आपको। इससे आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा आपके पीएल से कनेक्टेड रहता है, मतलब वो जो जीएल में जो आप नंबर देख रहे हैं ना, वो नंबर आपके ये कनेक्शन से मैच करेगा, इसमें कोई गैप नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि सब कुछ जीएल से कनेक्टेड है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट व्यू, और इसको बोलते हैं आइटमाइजेशन व्यू। इसको मैं क्लिक करूंगा, आपको जीएल बाय जीएल दिख जाएगा। देखिए 1, 17, 17, 500, 750, 9,000। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, 1, 17, 17, 500, 750, 9,000 अलग अलग भी दिख रहा है आपको। इसमें वैल्यू और क्वांटिटी दोनों दिखता है। सर वैल्यू दिखेगा, क्वांटिटी ये कंपोनेंट वाले में नहीं दिखता है, क्वांटिटी आपको ये आइटम वाले में दिखता है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी दिखेगा जीएल वाले पे। लेकिन जब ये हम इसको कंपोनेंट वाले में जाएंगे ना, यहाँ पे खाली वैल्यू दिखता है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिखता सर। ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं अपने प्रेजेंटेशन पे वापस जाता हूँ, आपको जो पेंडिंग पॉइंट्स एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ इतने। एक सर चीज ये, और समझना था सर। जी सर। अपना जैसे ये तो जीएल का टोटलिंग्स है सब, हम्म तो हम लोग एक जो कंजम्पशन की जीएल है या कोई भी जीएल है, उसमें हम्म इंटर यूनिट ट्रांसफर का जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं, हम्म वो तो हमारा टर्नओवर में नहीं है, ऑपरेशन वैल्यू नहीं है वो, तो ठीक वो है। कैसे अलग करेगा ये सैप? वो तो जीएल से अपन ग्रुपिंग अलग कर सकते हैं ना उसको, अपन वो जीएल को अलग बनाएंगे और उसकी ग्रुपिंग जैसे अलग हम रखेंगे। 50 तो जीएल को कंजम्पशन में डाल दिए, हम्म उस उन जीएल में इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। तो उनको अपन अलग करेंगे ना सर, उनको कंजम्पशन में न डाल के उनको जो प्रॉपर ग्रुपिंग जहाँ पे रखना चाहिए वहां रखेंगे अपन, और उसका फॉर्मेटिंग में वहां पे उसको दिखाएंगे। फिर कंजम्पशन में तो उतने ही डालेंगे जितने हमारे रेगुलर प्रोडक्शन शॉप फ्लोर में जीएल कंजम्पशन में जा रहे हैं। आज अपन क्या करते हैं सर, अपने सुविधा के हिसाब से अपन जो भी जीएल हमें समझ में नहीं आते हैं, जैसे डिफरेंस के, प्राइस वेरिएंस के, इसके उसके, हम सब मिला मुली के कंजम्पशन कर देते हैं। तो बाद में कंजम्पशन का जो ग्रुपिंग होता है वो हमारे लिए एक सरदर्द बन जाता है, उसको समझना ही मुश्किल हो जाता है बीच बीच में। तो वो सब चीजें हम हटा देंगे सर, फिर आपके जो तकलीफें हैं वो आपको कम कर देंगे आपकी। और कोई क्वेश्चन सर आपका? इनका जो कहना था कि कंजम्पशन हमारे दो पार्ट में होता है, एक आउटसाइड परचेज आइटम्स उसकी कंजम्पशन होता है, एक कैप्टिव कंजम्पशन जो अपने इन हाउस मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ उसका भी कैप्टिव कंज्यूम करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे हमने एक यूनिट में परचेज किया और उसको हम ट्रांसफर करके सेकेंड यूनिट में उसको कंज्यूम कर रहे हैं। परचेज हम्म किया हमने एक्स यूनिट में और उस मटेरियल कंज्यूम करना है वाई यूनिट में, एक्स यूनिट से राइट वाई में ट्रांसफर करके फिर वाई में कंजम्पशन बुक करते हैं। और राइट कभी कभी राइट जब हमारे जो इंटीग्रेटेड प्लांट है, इंटीग्रेटेड में पावर हम बनाते हैं, पावर हम एक प्लांट में जनरेट करते हैं और बाकी चार प्लांट में कंज्यूम करते हैं और आउटसाइड में सेल करते हैं, उसकी करेक्ट कंजम्पशन वहां जाके बुक होती है। तो इनका करेक्ट। कहना था कि इन हाउस कंजम्पशन ऐसे ही था ना पात्रा साहब, इन हाउस कंजम्पशन और बाहर आउटसाइड कंजम्पशन को अलग अलग सेपरेट करने की है ना आप। सही है, वो जो इंटर यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं ना वही सर। इंटरनेट एक ट्रांसफर हुआ फिर एक कंजम्पशन हुआ, दोनों दो चीजें अलग अलग है। एक इंटरनेट ट्रांसफर का डिटेल होनी चाहिए, एक इंटरनेट कंजम्पशन का भी होना चाहिए, इंटरनेट से कितना कंजम्पशन है, जो आपका ओवरऑल प्लांट लेवल पे जीरो हो जाएगा जो प्रोड्यूस हुआ। बट जो है सेपरेट सेपरेट यूनिट वाइज आपको निकालना है पीएल, उसमें सेपरेट सेपरेट देखना चाहिए इसमें इन हाउस कितना है और आउटसाइड। उसमें कैसा है ना सर, या तो आप उसका स्प्लिट वैल्यूएशन करके दो वैल्यूएशन टाइप बनाए, एक ही मटेरियल अगर अपना है, कि दो वैल्यूएशन टाइप बनाए, दोनों का जीएल और वैल्यूएशन क्लास अलग करें तो पॉसिबल है। अगर मटेरियल कोड भी एक ही है, जीएल भी एक ही है, तो उसको थोड़ा सा अलग करने में दिक्कत होती है। बट ये सेम चीज हमने मेरे कई सारे क्लाइंट की जगह पे किया हुआ है। जैसे हमने उसके स्प्लिट वैल्यूएशन बना दिए, इन हाउस, ट्रांसफर और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कभी कभी सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला भी एक एंगल आ जाता है बीच बीच में, आपके यहाँ आता है नहीं पता, बट किसी किसी के यहाँ आता है कि इन हाउस भी है और ट्रांसफर भी है और सब कॉन्ट्रैक्टिंग से भी वो मटेरियल बाहर से भी आता है। तो इस तरह से भी हम लोग तीन अलग अलग उसके वैल्यूएशन टाइप बना के जीएल अलग अलग खोल सकते हैं, और उसको भी हम दिखा सकते हैं ट्रायल बैलेंस में और पीएनएल में अलग अलग। वो डिपेंड करता है कि कैसी रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको हमको कॉन्फ़िगर करना है और कैसे उसको रिपोर्ट करना है। वो डिजाइनिंग का पार्ट हो जाता है फिर सर जो है। अभी जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो
जो आप एक्सेल में करते हैं एज इट इज हम पहले तो कोशिश करेंगे आपको करके देने की, बट उसमें अगर आपको कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, उसमें कुछ और डिजाइनिंग चेंज चाहिए, वो हम भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर जो है वो अलग से टाइम लगता है उसका, जो है जो भी इम्प्रोवाइज करना है उसका। सर मैं पवन कुमार कवि बोल रहा हूँ। हाँ जी, पवन कुमार जी बोलिए। सर एक हमारा, मैं भी स्टील प्लांट में हूँ। जी हमारा पास भी जो पावर जो है ना सर, इन हाउस जनरेट होता है और गवर्नमेंट से भी ड्रा करता है, वो 50-50 रेशियो में है। राइट। ठीक है ना। अपना प्रॉफिट सेंटर जो है एक ही है, बट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। जी तो अपना जो जनरेट हुआ पावर, तो सपोज 1000 यूनिट्स जनरेट हुआ है, और एमएससीबी से नहीं तो गवर्नमेंट से जो भी है सोलार से, हम 1000 यूनिट्स बाहर से परचेज किया हूँ। तो मेरा पावर कंजम्पशन टोटल जो है 2000 हुआ है। बट ये दोनों का सेटलमेंट कैसे करेंगे वो? ये पावर जो है अपना इन हाउस ऑर्डर का थ्रू कॉस्टिंग कर रहा है, और 1000 यूनिट जो है बाहर से गवर्नमेंट से ये परचेज कर रहा है। बट कंजम्पशन जो है ग्रिड में जाके मालूम नहीं पड़ता है कौन सा पावर कहाँ यूज हुआ। इसको कैसे सेटल करते हैं नॉर्मली? सर इसके लिए ये तो बहुत बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है, क्योंकि इन हाउस तो जैसे स्टील प्लांट में WHRV बॉयलर होता है, तो वहां से पावर तो जनरेट होता ही होता है, राइट। यस यस। तो और वो अपना ग्रिड से भी आता है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, या तो ऐसा करते हैं कि इसका एक कॉमन कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, और जहाँ पे कि दोनों पावर को मर्ज कर देते हैं, इन हाउस वाला भी वहीं पे इंटर करवाते हैं और परचेज वाला भी वहीं पे इंटर करवाते हैं, तो दोनों के खर्चे आ गए और दोनों के क्वांटिटी भी हम लोग कॉस्ट सेंटर में कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। और वो कॉस्ट सेंटर जो हमारा होता है, वो हमारा होता है लेट्स से सब स्टेशन वाला कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे कि हम लोगों का कंपनी में पावर जो है एक कॉमन प्लेस में आके एलोकेट होता है सब जगह पे। तो वो सब स्टेशन से फिर हम लोग इन हाउस की कॉस्ट निकालते हैं। लेट्स से इन हाउस की कॉस्ट आ रही है आपकी 3 रुपए यूनिट, और बाहर से आ रही है 10 रुपए पर यूनिट। ठीक है। यस यस। तो हम लोगों की एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलती है पावर की, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड रेट। और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलती है, जो हमारे पावर को यूज करने वाले जो हमारे प्रोडक्शन के जो डिफरेंट डिफरेंट शॉप फ्लोर या मशीन या प्रोसेस होते हैं, उनको हम लोग उस वेटेड एवरेज रेट में पावर का कंजम्पशन बुक करवाते हैं फिर। अभी जो ऑर्डर के अगेंस्ट में जो पावर जनरेट हुआ कास्ट सेंटर में कैसे ट्रांसफर करेंगे सर? उसका एक प्रोसेस होता है सर, वो हम लोग पावर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो पावर जनरेट होता है, जैसे अभी आपका WHRV बॉयलर से पावर का आपका स्टीम निकला, तो स्टीम निकला है तो स्टीम से आपका पावर जनरेट होगा। तो वो स्टीम, DM वाटर, बॉयलर, उसकी पूरी एक आइटरेटिव कॉस्ट वर्किंग होती है, जहाँ पे कि यूटिलिटीज का पूरा हमारा एक अलग से ही एक सॉल्यूशन है जो यूटिलिटी की पूरी चीजों को टेक केयर करता है। जहाँ पे कि राइट फ्रॉम योर वाटर, DM वाटर, स्टीम, बॉयलर टू पावर, एक दूसरे, क्योंकि इसमें क्या होता है सर कि यूटिलिटी में जैसे स्टीम है, स्टीम बॉयलर है, स्टीम बॉयलर को चलाने के लिए भी पावर लगता है, DM वाटर के लिए भी पावर लगता है, और DM वाटर जो है वो स्टीम को कंट्रीब्यूट करता है, स्टीम पावर को करता है। तो ये एक आइटरेटिव लूप है। तो ये लूप को कैसे क्रैक करना है ये हमें पता है, और इसके लिए हम लोग एक पूरा सॉल्यूशन बना के देते हैं, जिससे कि आपका ये पूरा यूटिलिटी का जो वर्किंग है, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये आपका पूरा सीमलेस हो जाता है। इसमें ये आइट्रेशन भी टेक केयर हो जाता है, और बुकिंग और कंजम्पशन और एलोकेशन, ये सब कुछ टेक केयर हो जाता है, और आपका पावर का अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट शीट बन जाता है। वाटर, DM वाटर, स्टीम, बॉयलर, पावर, और उसके बाद पावर कहाँ का कंज्यूम हुआ, कितना ग्रिड से आया और कितना इन हाउस आया, ये भी आपको अलग से पता चलता है, और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट वो भी पता चलता है। इसकी एक अलग हम लोग सॉल्यूशनिंग करते हैं, इसको यूटिलिटी कॉस्टिंग बोलते हैं हम लोग। हमने किया है, बहुत जगह पे किया है सर ये भी, और ये सक्सेसफुल है, काम भी करता है, अच्छा काम करता है। इसका बाद में एक डेमो दे सकते हैं सर इसका पावर के? हाँ दे देंगे सर, आप एक बार हमारे जो टीम में जो आपके साथ कांटेक्ट किए थे, आप उनको एक मैसेज डाल दीजिए, या फिर आप उनका कांटेक्ट नंबर है आपके पास, मैं अभी आपको दे भी रहा हूँ, कैसे आपको ठीक। कांटेक्ट करना है, तो उस पर आप कर लीजिए हमको, हम आपको हेल्प कर देंगे उसमें। ओके ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके। मैं जस्ट ये जो भी बैलेंस शीट और P&L आपको मैंने शो किया है, इसका कैसे क्या आगे का क्या स्टेप रहेगा, ये एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो ये पूरा टाइमलाइन जो है सर, 1 हफ्ता हमको लगता है डिस्कशन करने में, GL की ग्रुपिंग समझने में, GL की ग्रुपिंग आपसे लेने में,
और इस पूरे सॉल्यूशन को डेवलप करने में हमको लगभग 2 वीक लगता है सिस्टम में ये सारे शेड्यूल को कॉन्फ़िगर करना, बनाना, दिखाना, ये सब करना। और ये सब कुछ होने के बाद 1 वीक हमको लगता है ये आपके साथ बैठ के इसको टेस्टिंग करवाने में, क्योंकि जब आप अपने एक्सेल से इसको मैच करेंगे तभी आप इसको ओके दे पाएंगे। तो इसमें 1 वीक जाता है और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन को आपके प्रोडक्शन के सिस्टम में डिप्लॉय करने में 1 वीक जाता है। और उसके बाद सर हम लोग लगभग 2 मंथ, मतलब जैसे अगर मान लो हमने ये डिप्लॉय किया आपका लेट्स से 1 जून को, 1 जून को, तो 1 जून को डिप्लॉय करने के बाद 1 जून में आपका ये पूरा बैलेंस शीट P&L का आपको हेल्प करेंगे बनाने में, करने में, कि आप शुरू में तो 2 महीने 3 महीने एक्सेल से भी बनाओगे तो एक्सेल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है देखने में, करने में, इसमें जो भी टेक्निकल हेल्प होगी वो सब हम आपको करेंगे फॉर इनिशियल 2 मंथ। ये भी हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होता है सर। तो इस तरह से टोटल हम लोगों का 7 वीक्स का एक एफर्ट एस्टिमेट रहता है इसको करने का। और ये हम करते कैसे हैं, इसमें हमें आपके साथ एक NDA का एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और उसके बाद आपके SAP के सिस्टम को हम अपने इन्फोकॉस्ट के ऑफिस से ही बैठे-बैठे एक्सेस करते हैं। और इसमें कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट, कोई मतलब अनवांटेड या इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है। और जो भी डिस्कशन होती है ये जैसे आज हम लोग टीम पे बैठ के कर रहे हैं ऐसे ही हम टीम पे बैठ के करते हैं और टोटली हम आपके साथ अलाइन रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो ये कॉस्टिंग है सर। इसकी टोटल जो एकदम लोवेस्ट कमर्शियल है ये 7.5 है प्लस GST। और अगर अपन आज इसको कंफर्म करते हैं तो हम उसको 10% का एक वेबिनार का ऑफर दे सकते हैं आपको। और अगर आपको इसको कंफर्मेशन करना है तो आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और नाम अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो ये आपका कंफर्मेशन रजिस्टर हो जाएगा आज की डेट में। तो आप फिर डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। और उसके बाद आपको मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी और आगे की सारी फॉर्मेलिटीज जो भी NDA ये वो जो भी है वो सब टेक केयर हो जाएगा। सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज डालना है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। बहुत सिंपल रखा है सर मैंने, एकदम ऐसा कि मतलब कोई भी आपको यूज करना हो आप लोग तुरंत उसको यूज कर सकते हैं और अपना आगे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर है सर? मतलब एकदम सिंपल रखा है मैंने मतलब ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज रखी नहीं है मैंने, बहुत सिंपल रखा है चीजों को। आई होप मतलब आप लोग इन सब चीजों को समझ के मतलब प्रोसेस कर पा रहे होंगे जो भी मैंने बोला है। सर जी, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सैप सिस्टम होटल्स के लिए यूज हो सकता है, जहाँ पे सपोज 100 कमरे हैं, 2-3 रेस्टोरेंट्स है? सर देखिए ये पूरा अगर आपने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है तो यूज हो भी जाए, मतलब यूज तो होता ही है, बहुत सारे होटल इंडस्ट्री यूज करते हैं सॉफ्टवेयर SAP का। तो मतलब आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप SAP इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं होटल में या कैसे, मतलब का मतलब मेरे को थोड़ा नहीं, बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट बताएं। करने का ऐसे ऐसे अभी मेरे पास एक लोकल सॉफ्टवेयर से हम लोग ने एक लिया है सॉफ्टवेयर, जो जो अभी प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रहा है, जिसमें रूम रेंट, हाउसकीपिंग सर्विसेज, उसके बाद में रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह सब मतलब ये आइटम्स है। तो अगर सपोज मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिन्यू माय existing license, can I implement it, this software can I implement, whether the same software, your software can take the load of this 100 रूम का billings, बाद में ऑटोमेटिक बिल सेटलमेंट वगैरह सब, उसमें पेमेंट गेटवे वगैरह सब आ जाता है, ये सब हो सकता है क्या? सर ये कैसा है ना, ये SAP का सॉफ्टवेयर जो है, सबसे पहले तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये SAP का ही सॉफ्टवेयर है। इसमें मैं तो इनके इकोसिस्टम में सिर्फ एक मॉड्यूल में कंसल्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर SAP का है, इसमें मेरा कोई मतलब
लाइसेंसिंग में या कोई भी कहीं भी कोई भी रोल नहीं है मेरा। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट सर, एसएपी का सॉफ्टवेयर जो है ना ये थोड़ा कॉस्टली है। अगर आपका टर्नओवर 2000-3000 के आसपास है करोड़ में, तो ये फिजिबल और भाइबल होगा आपको, मतलब आपके बिजनेस को चलाने में। अगर उससे कम टर्नओवर है तो उसका जो है ये कॉस्ट थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो जाएगा। तो तो अभी ये आपको 7.5 लाख में आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपका 7.5 स्कोप लाख ऑफ वर्क क्या है, मॉड्यूल क्या है? मेरा स्कोप ऑफ वर्क जो मैंने आपको अभी एसएपी में करके दिखाया, बैलेंस शीट P&L बनाना, उसका शेड्यूल बनाना, उसका डीजीएल लेवल पे जाना और उसका अंडरस्टैंडिंग कराना, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके देना, ये स्कोप होगा सर 7.5 लाख का। तो बेसिकली जो बैलेंस शीट P&L के लिए जो मतलब जो साल में हम लोग एक बार करेंगे, या फिर क्वार्टरली बैलेंस शीट का, अगर सपोज क्वार्टरली अगर हमको सबमिट करने का है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, हाँ तो उसमें ये काम पे आएगा। लेकिन अगर करेक्ट मुझे टोटली अगर आपका सॉफ्टवेयर बिल मतलब लेके उसमें मुझे ये सब रूम बिलिंग, रेस्टोरेंट बिलिंग, उसमें बाद में उसमें रेस्टोरेंट में मेन्यू कॉस्टिंग वगैरह होता है, वो सब अगर इम्प्लीमेंट करने का, देन आई हैव टू गो फॉर आई हैव टू अप्रोच सैप सिस्टम, जो करेक्ट वेंडर्स है, सैप वेंडर्स। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, तो इसमें मुझे कौन से वेंडर को अप्रोच करना पड़ेगा अभी आपकी इसके लिए? सर वो आप मेरे मार्केटिंग टीम को कांटेक्ट करिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। जो प्रसून ओके, प्रसून करके है ना, जिनसे आपने कांटेक्ट किया, वो आपकी हेल्प कर देंगे, प्रसून। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन किसी की या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज बोलिए। और आप अपना कंफर्मेशन रजिस्टर करवा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप 10% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और हम आपका ये सॉल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके आपको बेनिफिट दे सकते हैं। Any questions by anyone? Okay, I believe no questions. So thank you for your participation, and I hope I have answered and given lot of knowledge and inputs to you. And pardon me if I have not able to justify your time in any way. And I tried my level best to give my maximum knowledge and experience to all of you. So thanks for your time, and thanks for your uh, patience learning. And really it means a lot to us. And thanks again for all of you to join this webinar. Thank you, thank you, thank you.